Hello everyone, and on the request of my student, I have come up with this live class, and in this class, I'm going to solve French reading comprehension, which will be useful for all beginners, all A1 level students who are going to give DELF A1 examination, and also if you are studying in a university or you are learning French as a subject. So this class is going to be very helpful for you because in every examination you must have seen that you get questions on reading comprehension, and most of the time you have seen that the students are not able to solve. All right, so this class is going to give them techniques. You are going to learn some techniques of solving it, so I'm going to show you some reading comprehension. So first of all, I will share my screen. You just watch it, and what you have to do, you have to read the reading comprehension text, and then there are some questions, and I will give you some time. You solve the questions honestly, all right, and then at the end I will show you the answer. All right. Okay, so let me share the screen first. So this is first time I'm coming live on YouTube. So if I'm audible, you can write in the chat section that yes, I'm audible. All right, so I am audible then. Okay, let me open that reading comprehension. All right. So now I'm going to share the screen. Okay. Right. So here is the reading comprehension set 1. So if you can read it and if it is visible to you, please confirm me in the chat section. Can you see this? Yes, all right, good. So now you read the reading comprehension, you just go through it, okay, and then there are 10 questions based on it, and then you answer. What you have to do, you don't have to copy the reading comprehension, just you write the answer. So at the end, when I'm going to reveal the answer, then you can match, you can match the correct answer from the answers that you have given. Okay, so yes, first you read the reading comprehension, then I'll show you the question also. Okay, so let me also read it. Ok, so je m'appelle Carlos, j'ai 13 ans et j'habite avec mes parents et ma sœur. Mon père est ingénieur et ma mère est infirmière. Ma sœur s'appelle Amina, elle a 8 ans. Je vais au collège du lundi au vendredi et je me lève à 6h30. All right. Je me douche, je m'habille et je prends mon petit déjeuner avec ma famille. Ensuite, je pars pour le collège à 7 heures. Mon collège est moderne et propre. J'aime bien mes professeurs, ils sont sympathiques et patients. Chaque jour, j'aime surtout la géographie et les sciences. À la pause, je joue avec mes amis dans la cour et parfois nous discutons et nous mangeons des biscuits. Alors, le collège se termine à 3 heures et je rentre chez moi à 3h30. Je joue un peu et puis je fais mes devoirs et le soir, je lis un livre. Alors, nous dînons à 8h30 et je vais me coucher vers 10 heures.
Et le samedi, je fais du vélo avec mes amis ou je vais au cinéma avec ma famille. Et le dimanche, nous restons à la maison ou nous rendons visite à des cousins et j'adore les week-ends. All right. Now, you read the question. Comment s'appelle le garçon? Quel âge a-t-il? Comment s'appelle le garçon? You have to say the name. Quel âge a-t-il? What is his age? Où habite-t-il? Where does he live? Que fait sa mère? What is the profession of his mother? Okay. À quelle heure part-il pour le collège? Combien de cours a-t-il chaque jour? Okay. Quelle matière aime-t-il? Matière, c'est-à-dire subject. Okay. Que fait-il pendant la pause? All right. Next is, que fait-il après le dîner? Et next, the last question is, que fait-il le weekend? So these are different questions. Okay, now you read the text once again and then write answer one by one. So I'll scroll it down after 5 minutes. You read the reading comprehension. Just 5 minutes and then we will start the question answer, or what you can do, you can after 5 minutes you write the answer in the chat box. Or if you want to know, please do it honestly, huh? And if you want to know some answers, then not answer, I mean, if you want to know the meaning of some words, you can ask me in the chat box, but please do it honestly. So, dear students of French Pro Global, so if you have completed all the, the complete text, if you have already read it, then I am going to show you the question.
Okay, so let me scroll it down a little bit. Okay, so here are some questions from A to F, which you can see on your screen. You write the answer first in your notebook. All right, and then you can write in the chat box. So if you have not taken, you can also take a screenshot of the text so that you can also answer. Anyone who is on French Pro Global, if you are able to solve these reading comprehension, so we will be doing two or three maybe. So if you can solve it, then I believe that if you are a student of a school or university or so or you are going for DELF examination, this is going to be very helpful for you. Okay, so now let me show you the next questions. Okay, so here are complete questions. Let me just put the extent. Okay, so are you ready, students of French Pro Global? Are you ready with your answer? Or if you need any kind of help, you can write in the chat box. Okay, okay, fine. So if everyone is ready, then what we can do? Okay, so let me first ask you what is the correct answer for the question one. Como s'appelle le garçon? So you have to write in the complete sentence. Write the answer in the complete sentence. Because whenever you are going for the examination, don't write one word answer. So if you are writing answers in reading comprehension, write in the complete sentence. That will give you more marks. It shows that you are good in the grammar section. One word answer will not give you that much marks. Okay, the first question, comment s'appelle le garçon? Let me see if you have understood the question and what is your right answer. Don't worry, right or wrong, you just write your answer in complete sentence. And if there are some mistakes, I will show you, I will reveal the answer at the end. Then you can correct your answer. So don't worry, this is first time that you are learning a foreign language. So it is normal to make mistakes.
Okay, so you can type your answer. Como s'appelle le garçon? Okay, you can see. Let me scroll it up so that you can see the answer. Como s'appelle le garçon? Voila, answer is there. Just you have to type in the chat box. Grammar that should be grammatically correct, and if it is not correct, I will correct your answer. Yes, let me see who is going to write the answer. Le garçon s'appelle Carlos. Answer given by Mr. Ankit Kumar Singh. Le garçon s'appelle Carlos. Very good. Correct answer. The second answer was given by Mr. Harsh. Il s'appelle Carlos. Il s'appelle Carlos. Yes, both the answers are correct. Okay, you can write your answer. The question was, what is the name of the boy? Okay, so there are two different ways. First technique is you can simply say the boy's name is Carlos, or simply you can replace the boy's name like Harsh Bhandari has written ill, है ना? So the boy can be replaced by ill, है ना? So you must have watched my video on French subject pronouns. So there I have differentiated different types of subject, है ना? I have taught you different type of subject. इल और इल को हम फॉर एग्जांपल शाहरुख खान है तो शाहरुख खान को वी कैन रिप्लेस बाय इल. इफ इट इज कैटरीना कैफ तो कैटरीना कैफ को वी कैन रिप्लेस बाय एल. तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट कार्लोस एंड कार्लोस इज अ बॉय, है ना? तो इंस्टीड ऑफ रिपीटिंग अगेन एंड अगेन कार्लोस और द बॉयज नेम इज, सो यू कैन सिंपली राइट इल. The both the answers are correct. Very good, you got one marks. Now the next question is kel aaj atil. Kel aaj atil. Now your answer, please type your answer. I want everyone's participation, not just one or two student. Kel aaj atil. Yes, I'm waiting for your answer. Yes, please type your answer. So if you solve this reading comprehension honestly, believe me, in your examination, you are going to get full marks. Yes, I'm still waiting for il a 13 ans. Let me see. J'ai 13 ans. Voila. Very good answer. Il a 13 ans. But there is a one spelling mistake, Mr. Ankit Kumar. Can you check? There is a spelling mistake in your answer. Answer is correct, but just a small thing that you have to add. Please correct. I want to see the correct. Ilathrazo. Exactly. Yes. Right answer. ANS. ANS indicates ears. All right. Il a 13 ans. So this sentence, what was the question? Quel âge a-t-il? What is his age? है ना? So here is the question of knowing age of a person. You must have watched my video, my previous video, जिसमें मैंने बताया कि how to ask age and how to answer questions on age, है ना? हम कैसे किसी से एज पूछ सकते हैं और अपनी एज कैसे बता सकते हैं. तो अगर पूरा डिटेल चाहिए तो यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो. ठीक है, द करेक्ट आंसर इज il a 13 ans. Very good. Now the next question that we are going to discuss, où habite-t-il? Où habite-t-il? Yes, your answer please. Où habite-t-il? Où habite-t-il? Yes, type your answer. Okay, answer not given. Okay. Okay, let me tell you the yes. There is a word is missing there. The answer is actually Mumbai. So you can add in the text Jabit a ke baad you can add Mumbai. So now you type your answer with complete sentence. Yes. So Jabit a
Now it must be visible, no? Yeah, it is given, I guess. Jabid a Mumbai avec mes parents. Yeah, it is given. Yes, now write the answer in sentence. Yes, please type your answer. Who abitil? है ना? Where does he live? Answer you know, but you write in sentence so that you know you should know how to write the questions on address. How to answer questions on address. Il habite à Mumbai. Yes, the answer is correct. Il habite à Mumbai. But one thing, I think you are typing on your mobile phone, so there should be an accent on the top of A. है ना? Let me show you. For example, il habite à Mumbai. Yes, il habite à Mumbai. I have already given you the answer in the chat box. Il habite à Mumbai. So you have to give accent on the top of E, right? So the question was to know the address of a person, है ना? मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, how to ask address of a person, और कैसे अपना एड्रेस हम बता सकते हैं और कैसे हम उससे अपना एड्रेस पूछ सकते हैं, ना? हाउ टू आस्क एड्रेस एंड हाउ टू आंसर द क्वेश्चन ऑन एड्रेस, वो भी मैंने वीडियो बनाया आपके लिए, तो एनीवन कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दिस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. वो अभी क फे सा मैर, क फे सा मैर, है ना? उसकी मम्मी क्या करती है? व्हाट डज हिज मदर डू, है ना? नाउ go to the text and see the answer and write your answer in the chat box, है ना? क फे सा मैर, है ना? उनकी मम्मी क्या करती है? व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ हिज मदर? Yes, write your answer. Sa mère est infirmière. Very good, very good. Sa mère est infirmière. The correct answer is, this is correct answer, but मुझे वो type कर देता हूँ so that you don't make any mistake in the accent. Mère. Sa mère est infirmière. Infirmière. Good. Sa mère est infirmière. Okay, this is one answer. What is the second possibility? Second possibility. Sa mère est infirmière is the right answer. है ना? His mother is infirmière. And also type the meaning of infirmière. Can you please type in the chat box if you know the meaning of infirmière? Yes, nurse. Infirmière is a nurse. All right. Now the second possibility. Okay, sa mère et infirmière is one way of answering this question. Second, how we can replace sa mère? Is there any possibility? Which subject pronoun we can use, like je, tu, il, elle, nous, vous, उनमें से कौन सा वाला we can use? Yes, you can write L. Yes, correct answer. Elle est infirmière, which means she is a nurse. Elle est infirmière. Very good. Miss Sweta, yes, your answer is also correct. Elle est
infirmière. She is a nurse, है ना? One more clarification for you: when you are writing profession in French language, English में you write she is a nurse, he is a manager, है ना? He is a doctor. But French में we don't give that article before profession. Okay, so now this is clear. Now let's discuss the next question. Next question is Cafe Samer. Okay, next is a quelle heure? À quelle heure part-il pour le collège? Okay, next. À quelle heure part-il pour le collège? What time he goes for the college? है ना? वो कॉलेज कितनी बजे जाता है? What time he goes to college? Yes, you can write your answer. Yes, you can write your answer in the chat box. Yes, your answer, please. What time he goes to college? Yes, you can search your answer in the text. Il parle pour le collège à 7 heures. Bravo, bravo, bravo. क्या बात है, कमाल कर दिया है आपने मिस्टर अंकित. Bravo. Bravo is an expression in French language that we use if you done something good. है ना? इंग्लिश में अगर बोले तो वेल डन, हिंदी में बोले और उर्दू में बोले शाबाश. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. गुड. Okay, so il part pour le collège à 7 heures. All right. But you remember when you write in the question, I mean answer in the exam, तो आ के ऊपर में accent दे देना. I know you are not able to write the accent here on your mobile phone, but in the exam you have to give this accent, है ना? ए के ऊपर पे जो accent मैं बताया हूँ वो वाली जो मैं टाइप कर रहा हूँ अभी. Now you can see, है ना? आ. Okay. So now let's go to the next question. Okay. The next question is combien de cours a-t-il chaque jour? Combien de cours? पहले तो मुझे आप इस क्वेश्चन का मतलब बताओ. What is the meaning of combien de cours? And what is the meaning of chaque jour? Type the meaning in the chat box and then answer the question. Combien de jours a-t-il? Combien de cours? Sorry, combien de cours a-t-il chaque jour? Now, yes, your answer. Yes. Combien de cours? How many courses? Not courses, classes. And how many? Combien is the right answer. Combien means how many in this context, or combien means how much bhi hota hai. All right. Combien means how much and how many. So in this context, it is how many. Okay. You are right. Courses, instead of saying courses, you can say classes. है ना? How many classes are there? And what is the meaning of chaque jour? Chaque jour.
Yes, type in the chat box chaque jour, every day. Yes, each day or every day, chaque jour. Now you answer the question. How many classes are there each day? So you have to answer that uski class kitne din, kitne, I mean, kitni classes hai, how many classes he has every day. 5 classes, your answer is right. But if you write this in this style in the exam, you will get 0 marks, right? So you have to write in French. Ki he has 5 classes each day. So you have to write like this. He has. Il a cinq cours. Il a cinq cours. Still there is a spelling mistake. Bonjour, monsieur. Okay. So il a cinq cours. Cours mein I think you should add s also. Na classes. है ना plural. 5 is plural. Il a cinq cours tous les jours. Yes, this is what I was expecting. Il a, yes, Mr. Harsh, cours with S will be the right answer because classes is plural. है ना? So you have to add S. All right. Il a cinq cours tous les jours was given by Ankit Kumar. Il a cinq cours tous les jours. Yes, this is absolutely right answer. है ना? Good. Okay, so next is, let's do the next question. Next question is, quelle matière aime-t-il? Everyone, you can see this question. Quelle matière aime-t-il? Quelle matière aime-t-il? Quelle matière aime-t-il? Matière, can you give me one, the word for English? I mean, in English, just give me one word of matière. In this context, matière has different meaning in different context, but in this context, what does it mean, matière? Qu'est-ce que ça va dire, matière? Le mot means word. Le mot matière va dire quoi? What does it mean? The word matière. Yes, so quelle matière aime-t-il? Now you write the meaning in the text and then you give me the answer. Now the text is on your screen. Subject. Yes, Mr. Ankit, you are right. Matière means in this context is subject. So now you answer. Quelle matière aime-t-il? It has to not something relating to what he likes. No. Aim is it. Aime it means to like, but matière is not that. It doesn't mean like. Okay. The word aime it means to like, and but in this context, matière is subject. Now you have to answer which subject he likes. Il aime surtout la géographie et les sciences. Voilà, voilà. क्या बात है. Il aime surtout la géographie et les sciences. Absolutely right answer. Absolutely right answer. है ना? Although the word matière is not here na in the text, but you have understood कि here it is about likes, है ना? J'aime, which means I like. Surtout, do you know what is the meaning of surtout? Yes, you can write in the chat box what is the meaning of surtout. What is the meaning of surtout? Please, you can write. No. Surtout is no. Can somebody else try? Mr. Shivans, you are almost there, but the exact word I'm looking for. I'm looking for the exact word for surtout.
Most? No. You are also right. You are there. But I want the word, exact word for sukhtu. Anyone can try guess sukhtu? Really? Really is almost there, but the exact word I'm still looking for. Okay, so okay, let me tell you the meaning. Sukhtu means especially. Okay, so I like especially geography and sciences, है ना? So there are different subjects in the college, है ना? But what I like especially, है ना? है ना? So I like especially is the word, but otherwise you guys are right. Really, most or a lot, yeah, you are fine. But the exact word is especially or particularly, है ना? I like geography and science. All right. Now come to next question. Next question is quelle matière that we have done. Que fait-il pendant la pause? Que fait-il pendant la pause? Okay, that is the question. Question H. Que fait-il pendant la pause? Pendant means here during. All right, and pause means break. है ना? Que fait-il pendant la pause? Okay, now you see the text and write the answer. Yes, answer is there in the text. Let me have water. À la pause, il joue avec. See, your answer is correct, but you will get, if you write this question answer, you will get point 0.5 out of 1 marks because there are some grammatical mistakes. So anyone in the class of, in this class can correct à la pause, okay, and then il joue avec, till there it is correct, है ना? Just one minor mistake. Pendant la pause, il joue avec ses amis. Bravo, bravo. Correct, correct. Pendant la pause, है ना? During the pause, during the break, il joue avec ses amis. He plays with his friends. Correct. ठीक है, आपने ये सीख लिया. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Que fait-il pendant la pause? Okay, now number I. Que fait-il après le dîner? Que fait-il après le dîner? Now you do the answer. Que fait-il après le dîner? Here is the text and find the answer. Yes, you can write your answer correctly. See, anyone who is attending my class on French Pro Global, please write answer honestly, because if you are going to appear in any examination, nobody is there to help you. Only your knowledge will help you. So do it honestly.
Yes, I am waiting for your answer. Après le dîner, il va se coucher vers 10 heures. Let me see. Le soir, je lis un livre ou je joue à un jeu vidéo. Nous dînons à 8h30. Your answer is après le dîner, il va se coucher vers 10. No, let me see. What was the question? Question was, आप कब fait-il après le dîner? डिनर के बाद वो क्या करता है? राइट, दैट वाज द क्वेश्चन. डिनर के बाद वो क्या करता है? And you have given answer. Après le dîner, il va se coucher vers 10 heures. Okay, let's read. Nous dînons à 8h30 et je vais me coucher vers 10 heures. Yes. Il va se coucher vers 10 heures. Okay, let me see. Yes, this is correct answer. Il va se coucher vers 10 heures. Correct. Voila, bravo. You are doing really very well. Il va se coucher vers 10. Okay, next. I think that would be the last question. Que fait-il? Okay, que fait-il le weekend? Que fait-il le weekend? है ना? So weekend पे वो क्या करता है? Now write your answer. Yes. Yes, so you have to write the whole answer. What does he do on weekend? Last para. हाँ तो you have to write answer ना, ऐसा नहीं last para complete. If you write this answer in the examination, you are gone. Okay. Le samedi il fait du vélo. Okay, le samedi il fait du vélo. Correct. Avec ses amis. Correct. Et il va au cinéma avec ton famille. No, 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 no. What is the sentence? Le samedi, which means on Saturday, je fais du vélo. So I do cycling, है ना? तो क्या हो जाएगा? He does cycling. तो il fait du vélo, that is correct answer. उसके बाद क्या? Avec mes amis, यानी कि with my friends. तो आपको क्या आंसर करना? With his friends. Avec ses amis, that is also correct. Next is je vais au cinéma avec ma famille. I go to cinema with my family. Right? तो आंसर क्या होना चाहिए? Il va au cinéma avec sa famille, with his family. ton famille का मतलब होता है he goes to cinema with your family. But that is not the right answer. Answer is he goes to cinema with his family. Okay, with his family. तो il va au cinéma avec sa famille, because famille is feminine, तो हम वहां पे possessive adjective का सा वाला लिखेंगे. Lo samedi il fait du vélo avec ses amis ou il va au cinéma avec sa famille. Ok, le dimanche il reste à la maison ou rend visite à des cousins. Voilà. Bravo, bravo, bravo. Très bien, très bien. Vous êtes magnifique. Hein? Vous êtes magnifique. Voilà. C'est une bonne réponse. Okay, so this reading comprehension is now complete. You know how to do the answer. So generally you make mistakes while you, like अभी एक mistake हुआ कि il va au cinéma avec ton famille. No, we are talking about third person ना. He goes to cinema with his family. है ना? तो you have to answer in that way. ठीक है? Okay, next let. ओके, वन क्वेश्चन इज क्लिके इसी pour découvrir une question bonus. यहाँ का मतलब है कि क्लिक हियर to discover one more question, bonus question. Let me click. Let's see which question comes. Voilà, voilà. The question bonus. Quelle est la profession du père de Carlos? This is a bonus question. Quelle est la profession du père de Carlos? अब आप इसका आंसर बताओ हमें. Quelle est la profession du père de Carlos? Okay, let's search here your answer. Yes, you write the answer. Quelle est la profession du père de Carlos? Answer is there in the first paragraph.
but you have to answer grammatically correct. Le père de Carlos est ingénieur. This is correct answer. And there is one more possibility. Can you please write that possible answer also? Instead of writing Le père de Carlos as a subject, you can use one single word for this. Il est ingénieur. Voila. This is something I want from you. You should be smart in answering the question. Yes, Miss Sweta. Il est ingénieur. Ankit, il est ingénieur. And le père de Carlos est ingénieur. Okay. So when see now you will ask me, sir, both the question, both the answers are correct. Yes, absolutely. You are not going to lose your marks. But you just see your answer. Le père de Carlos. So it sounds like English. The father of Carlos is engineer. It sounds like English. So you are translating in your mind. The father of Carlos is engineer. That is also right. But instead of thinking like English, you think in French. Okay. Simply you write il est engineer. This is very short also. There is very less possibility to make any grammatical error, है ना? So the father of Carlos can be replaced just by ill. और सपोज अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन होता द प्रोफेशन ऑफ कार्लोस मदर, तो हम क्या करते हैं, इल की जगह में एल लिखते हैं, एल ए, एंड व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ हिज मदर इज अ नर्स, है ना, एफर्मियर. सो एल ए एफर्मियर. फादर आया तो वी हैव गिवन हियर इल, अगर मदर होती तो एल देते हैं. ठीक है. So if you write in this, then it shows that your competency in the language. Okay, so now this is done, and one more reading comprehension we will be doing. Let me share that. Okay, the next is again important one. Let me see, it's a Wazir, I guess. Yes, good. Okay. Next, I'm going to share with you Male Wazir. Very important topic for everyone, because these are the theme that I have taken. It's very useful for beginners level. है ना? Okay, now you have to read first. Okay, read this reading comprehension. है ना? Read it. Then I'll show you the question, and then we will discuss the question and answer all together. But first you read. Why I'm asking you to read? So that you in the exam you will read, it will develop your reading capacity also. The first reading is very important. So please read. I give you 5 minutes. Or what is the technique? When you are reading now, read silently. You don't need to read it loudly, है ना? और ऐसा वर्ड जो आपको डिफिकल्ट लगे आप उसको नोटबुक में लिख सकते हो, है ना? सो यू कैन राइट द डिफिकल्ट वर्ड इन योर नोटबुक ऑल्सो, है ना? विच मीन्स वाई आई एम आस्किंग यू टू राइट दोज वर्ड्स इन योर नोटबुक. इसका मतलब है कि वो वर्ड आपको पता नहीं है ना, जो आप जानते हो डोंट राइट, बट द वर्ड विच इज न्यू टू यू, यू कैन राइट डाउन इन द नोटबुक, और बाद में आप मीनिंग लिख सकते हो या पूछ सकते हो मुझसे, है ना? तो इससे क्या होगी, आपकी वोकेबलरी विल ऑल्सो बिल्ड अप, है ना? चलो, आई गिव यू 5 minutes, रीड इट. तब तक मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा.
Now, what I can do, I can also read for my audience. क्योंकि कई बार ये होता है कि दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस माई डियर स्टूडेंट्स, आई हैव सीन दैट स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल और यूनिवर्सिटी, दोज हु आर लर्निंग फ्रेंच एज अ सेकेंड लैंग्वेज और as an elective subject, they understand the reading comprehension. They also give the right answer, maybe with some grammatical mistakes, but they are not able to read it properly. है ना? So, if you are learning a foreign language or French language, you should know how to read also. And reading correctly is also very important. है ना? अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर आपने कर लिया, यू अंडरस्टूड व्हाट इज रिटन, बट इफ यू आर नॉट एबल टू रीड इट, तो इट डजंट साउंड गुड ना. सो इसलिए मैं एक बार रीड करता हूँ, यू कैन ऑल्सो लिसन. है ना? दैट विल हेल्प योर लिसनिंग स्किल, प्लस दैट विल हेल्प योर प्रोनाउंसिएशन स्किल. है ना? कि किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, वो भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. है ना? इट्स नॉट ओनली टू गेट मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू speak correctly. Okay, so bonjour, bonjour. याद होगा ग्रीटिंग्स हमने करा था, माय फर्स्ट वीडियो ऑन फ्रेंच ग्रीटिंग्स विच इज देयर on my channel French Pro Global. Bonjour, je m'appelle Thomas. Je m'appelle Thomas et j'ai 14 ans. J'ai 14 ans. J'habite à Lyon avec ma famille. मैं स्लोली रीड कर रहा हूँ. आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन फ्रेंच प्रो ग्लोबल दे आर बिगनर्स. Bonjour, je m'appelle Thomas et j'ai 14 ans. ठीक है, j'ai 14 ans. J'habite à Lyon avec ma famille. J'habite à Lyon avec ma famille. J'ai un frère. J'ai un frère et une sœur. जनरली आई हैव सीन स्टूडेंट्स रीड ई टी को क्या पढ़ते हैं, वो एत पढ़ते हैं, एत. दैट इज रॉन्ग. है ना? सो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज ए. ई टी इज pronounced as A. So j'ai un frère et une sœur. Un frère et une sœur. One brother and one sister. आ का मतलब भी वन होता है और यून का मतलब भी वन होता है, लेकिन आ हम यूज करते हैं मैस्कुलिन के पहले, और जैसे कि ब्रदर है ना, फ्रेयर इज अ ब्रदर, वो मैस्कुलिन है तो हमने आ लगाया, वन ब्रदर. उसके बाद हमें क्या, यून. यून सर. यून का मतलब भी वन होता है, लेकिन यून हम यूज करते हैं बिफोर फेमिनिन. अब यहाँ पे सर का मतलब होता है सिस्टर, तो फेमिनिन हुई ना, तो यून लगाया. Un frère, one brother, une sœur, one sister. Ok. Mon frère s'appelle Luca. Mon frère s'appelle Luca et ma sœur s'appelle Marie. एक बार फिर से मैं पैराग्राफ रीड करता हूँ. फर्स्ट वाला, Bonjour, je m'appelle Thomas et j'ai 14 ans. J'habite à Lyon avec ma famille. J'ai un frère et une sœur. Mon frère s'appelle Luca et ma sœur s'appelle Marie. Next paragraph. Pendant la semaine, je vais au collège. Je vais au collège. Je me réveille à 7 heures. Je me réveille à 7 heures. Je me douche et je m'habille rapidement. Rapidement. Rapidement का मतलब होता है fast. Je m'habille rapidement. Je prends mon petit déjeuner. Je prends mon petit déjeuner avec ma famille. है ना? À 7 heures et demie. 7 heures et demie. ये ए दमी का कॉन्सेप्ट शायद आपके लिए न्यू होगा. ए दमी का मतलब हो गया 30 मिनट्स का जो ड्यूरेशन होता है. अगर हम कहेंगे सेट अर ए दमी का मतलब हो गया 7:30. अगर मैंने कहा यून अर ए दमी का मतलब हो गया 1:30. ठीक है. विथ अर दमी का मतलब हो गया 8:30. तो ए दमी इट इंडिकेट्स 30 मिनट्स का जो स्लॉट होता है. सो सेट अर ए दमी. ensuite je vais au collège à pied. À pied मतलब पैरों से, है ना. les cours commencent à 8 heures et finissent à 16 heures. Les cours commencent à 8 heures et finissent à 16 heures. Okay, third paragraph I am reading. J'aime beaucoup le sport.
है ना, j'aime beaucoup le sport। यहाँ पे बात हो रही है लाइक्स की, हमने लाइक्स और डिसलाइक्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हो। j'aime beaucoup le sport la lundi et le mercredi, le lundi et le mercredi je joue au football avec mes amis, le mardi je fais du vélo dans le parc प्रे द शेमुआ, प्रे द का मतलब होता है नियर बाय, है ना, प्रे द शेमुआ, शेमुआ का मतलब होता है एट माय होम, आई मीन मेरे घर के पास, शेमुआ मीन्स एट माय हाउस, एट माय होम। ओके, le jeudi, le jeudi je nage pendant une heure, let me see is there anything missing, le jeudi je nage, yes correct, le jeudi je nage pendant une heure, है ना, je nage pendant une heure, le vendredi je me repose et je regarde un film, le vendredi फ्राइडे को what I do, je me repose et je regarde un film, ठीक है। नेक्स्ट द फोर्थ पैराग्राफ जो le weekend से स्टार्ट हो रहा है, le weekend je me lève plus tard, plus tard काफी लेट उठता हूँ, you know, vers 9 heures, le samedi matin je fais mes devoirs, है ना, samedi matin je fais mes devoirs, l'après-midi je joue aux jeux vidéo, je joue aux jeux vidéo ou je lis un livre, parfois je vais au cinéma avec mes amis, parfois je vais au cinéma avec mes amis, et le samedi et le samedi soir nous mangeons au restaurant, है ना, nous mangeons au restaurant en famille, et le dimanche nous rendons visite à mes grands-parents, ma grand-mère cuisine très bien, ma grand-mère cuisine très bien, elle prépare toujours un délicieux gâteau au chocolat, गातो ओ शोकोला का मतलब होता है चॉकलेट केक, है ना, ये गातो ओ शोकोला, ये ना ओ के बाद ना हम एक फ्लेवर लगाते हैं, आप ओ के बाद आपने स्ट्रॉबेरी लगा दिया तो वो स्ट्रॉबेरी केक हो गया, अगर आपने चॉकलेट लगाया तो चॉकलेट केक हो गया, है ना, जो फ्लेवर होता है वो आप ऐड करते हो, गातो ओ प्लस गातो ओ शोकोला। सो l'après-midi quand il fait beau, quand il fait beau, यहाँ पे il fait beau का मतलब होता है ये इट इज टॉकिंग अबाउट द वेदर, है ना, il fait beau का मतलब है इट इज नाइस वेदर, है ना, il fait beau, है ना। जैसे अब यहाँ पे इल का मतलब यू यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, इल मतलब जनरली होता है ही और, है ना, लेकिन इल का एक मतलब इट भी होता है, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया अपने वीडियो में जिसमें मैंने फ्रेंच सब्जेक्ट प्रोनाउन पढ़ाया था। तो इल का मतलब यहाँ पे इट, जैसे हम बोलते हैं ना इट इज रेनिंग, है ना, इट इज नाइस, तो वो वाला कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे, इल फे बो, है ना, इट इज नाइस वेदर, इल फे बो, है ना। सो l'après-midi quand il fait beau nous faisons une promenade, nous faisons une promenade, promenade means to have a walk, है ना, promenade is a walk in this context, dans la forêt, dans la forêt, in the jungle, j'adore passer du temps avec ma famille, j'adore, j'adore means you know I adore, passer du temps avec ma famille. The last sentence is voilà, voilà ma vie quotidienne, my daily life. Et toi, quels sont tes loisirs préférés, है ना, आपकी क्या है लेजर टाइम में आप क्या करते हो, what are your hobbies, है ना। Okay, so now the reading is over. Now see the question and do the answer. The first question is comment s'appelle le garçon? Comment s'appelle le garçon? Please answer from the text. Comment s'appelle le garçon? Yes, you can answer in the text. Comment s'appelle le garçon? है ना? Yes. Okay, il s'appelle Thomas. Il s'appelle Thomas. Yes, your answer is right. है ना?
इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है, हाउ टू आस्क नेम एंड हाउ टू आंसर दैट क्वेश्चन, है ना. Como tu tapel, informal way of asking. Como vuvuz appelé, formal way of asking. And then je m'appelle और tu t'appelles, il s'appelle, elle s'appelle. इस पे मैंने वीडियो बनाया है, how to ask name in French and how to answer. Okay, your answer is absolutely right. Il s'appelle Thomas. Okay, next question. Let's search. Okay, quel âge a-t-il? Quel âge a-t-il? Yes, your answer please. सिल्वू प्ले, रेपोंदे. रेपोंदे का मतलब हो गया आंसर. सिल्वू प्ले मीन्स प्लीज. फॉर्मल वे ऑफ आस्किंग प्लीज, सिल्वू प्ले. केल आज आतिल. ओके, लेट्स सी इन द टेक्स्ट. केल आज आतिल. यस, योर आंसर केल आज आतिल. Il a 14 ans. Answer was given by Mr. Ankit Kumar. Il a 14 ans. Il a 14 ans par Sweta. Voilà, il a 14 ans. ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है. दिस इज करेक्ट आंसर, है ना. टेक्स्ट में दे रखा है जे का तोर्जों का मतलब हो गया आई एम 14 years old. Most of the time I have seen students what they do, you know, they copy the same sentence and write in the answer. Like जे का तोर्जों उसने कॉपी किया, आंसर में लिख दिया. दैट इज क्वेश्चन है कि उस लड़के का एज क्या है. व्हाट इज द एज ऑफ द बॉय इन द टेक्स्ट. आपसे आपकी आपकी एज नहीं पूछी जा रही, उस लड़के की एज पूछी जा रही है. तो डोंट कॉपी. आपने जो आंसर दिया दैट इज करेक्ट. इफ यू राइट दिस आंसर यू विल गेट फुल मार्क्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड. ओके, इल आ कातोरजों वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन, उ आबितिल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज उ आबितिल. यस, योर आंसर. उ आबितिल. यस, राइट योर आंसर. इलाबित आलियां. ठीक है, जस्ट थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है. स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, वो एक्सेंट नहीं आ रहा होगा बिकॉज इलाबित आलियों. हर्ष पार. यस, अंकित यस, श्वेता यस. करेक्ट आंसर इलाबित आ लियों. वेरी गुड. आ के ऊपर एक्सेंट देना है. और लियोस, राइट द नेम ऑफ एनी सिटी विद कैपिटल लेटर, है ना. दिल्ली, मुंबई, लियों, पेरिस, एनी कैपिटल सिटी, write in capital alphabet. The first alphabet should be in capital. और आ के ऊपर में एक्सेंट देना है. ओके, करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज aquel se reveitil pendant la semaine. Aquel se reveitil pendant la semaine. The question number D. Aquel se reveitil pendant la semaine. Sir, your audio is breaking. Okay, okay, let me read slowly. À quelle heure se réveille-t-il pendant la semaine? है ना. What time he wakes up during the week? है ना. ये आपको आंसर करना है. Se réveiller means to wake up, है ना. So what time he wakes up during the week? एक होता है वीकेंड और एक होता है वीकडेज. तो ये समय इज अ वीकडेज. ओके, नाउ योर आंसर. I hope is it okay now. Pendant la semaine, il se réveille à 7 heures. Pendant la semaine, let me see the answer. ऊपर में क्या है. Yes, je me réveille à 7 heures pendant la semaine. Voilà. Yes, yes. Ankit. Okay, your answer is correct. Okay, okay. Okay, next question is this. Quel sport fait-il
Le lundi et le mercredi. You answer this. Quel sport fait-il le lundi et le mercredi? है ना? Monday and Wednesday को which sports does he play? ठीक है. Okay, now you write your answer. La lundi e lo mercoledì il giù football avec ses amis. Bravo, 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 bravo. Very good answer. Very good. Very good answer. Yes. Next. Next. Yeah. Où va-t-il le jeudi? Où का मतलब where? Où va-t-il le jeudi? है ना? थर्सडे को वो कहाँ जाता है? Où va-t-il? Where does he go on Thursday? Now your answer, please. Yes, your answer. एक सेकेंड, आंसर इसमें नहीं है. Yes, jeudi. ये है करेक्ट आंसर. जस्ट लेट मी share this. Wait, there was a text missing. Yes, now you can see the correct answer. So Jadi ko where does he go? है ना? That was missing in the previous text. That is why मैंने उसे stop किया sharing and then हमने reshare किया. Now you can see the answer. Le jeudi je vais à la piscine. है ना? Jeudi, le jeudi je vais à la piscine. Now you can give the right answer. So where does he go on Thursday? Où va-t-il le jeudi? Your answer. Just a second, I'll have to connect my charger. Just give me 1 minute and you can write your answer. Okay, your answer. Le jeudi, il va nager pendant une heure. No, the question is where he goes. You know, the question is not ki what he does. है ना? अगर कोई, if the question is what he does on Thursday on Jadi, then naje, which means swimming, that would be right answer. But the question is where he goes. Uvatil lo Jadi. Where does he go on Thursday? The Thursday को वो कहाँ जाता है? Piscine, à la piscine, swimming pool. है ना? Le jeudi, il va à la piscine. Yes, Sweta, Ankit, yes, right. Le jeudi, il va à la piscine. So where does he go? He goes to swimming pool, à la piscine. है ना?
Okay, next question is uh, okay, क फेतिल लुसामदी, क फेतिल लुसामदी, है ना, सैटरडे को व्हाट डज ही डू, क फेतिल लुसामदी, है ना. नाउ यू आंसर दिस क्वेश्चन. क फेतिल लुसामदी, है ना, क फेतिल लुसामदी. योर आंसर. Okay, your answer, क फेतिल लुसामदी. Yes, your answer please. It's there. You can see the answer. लुसामदी, है ना. नीचे से आप आ जाओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ में उसका आंसर है लुसामदी माता, है ना. Yes, are you writing? Please write your answer, है ना. क फेतिल लुसामदी, तो व्हाट डज ही डू ऑन सैटरडे. सामदी इज सैटरडे. Yes, your answer. Le samedi, il fait le devoir, joue aux jeux vidéo et il lit un livre. Le samedi matin, il fait ses devoirs. Bravo. Yes, correct answer. It's there. Le samedi matin, je fais mes devoirs, which means I do my homework. तो क्वेश्चन में उसके बारे में. Il fait ses devoirs. He does his homework. आफ्टरनून में व्हाट ही डज, इल, इसमें क्या है टेक्स्ट में, जजू ओ ज वीडियो, विच मींस आई प्ले वीडियो गेम्स. तो आपको क्या लिखना है, ही प्लेज वीडियो गेम, है ना. इल जू ओ ज वीडियो, ठीक है. और आपको जिसमें इसमें टेक्स्ट में ज ली अ लिव्र, आई रीड अ बुक, तो आपको क्या लिखना है, ही रीड्स अ बुक, है ना. ओके, दिस इज करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऊ वातिल लो दिमोश, है ना. ऊ का मतलब यहाँ पे वेयर, है ना. ऊ विद एक्सेंट, वेयर. ऊ वातिल लो दिमोश, है ना. संडे को वो कहाँ जाता, वेयर डज ही गो ऑन संडे, है ना. ऊ वातिल लो दिमोश. यस, योर आंसर. लेट मी शो यू द टेक्स्ट. या, टेक्स्ट इज हियर ऑन योर स्क्रीन. Yes. Le samedi, l'après-midi, et parfois je vais au cinéma avec mes amis. Et le samedi soir, nous en famille. Le dimanche. Yes, your answer. I think two students are very active. It's Ankit Kumar Singh and Sweta Alam. The way you are writing the answer, the same way if you write in any examination in the world, you will get full marks. And that is the simplest way, very easiest way, clear answer. This is how you have to answer when you are solving the question answer on reading comprehension. Yes, complete the answer. हाँ, so your answer, le dimanche, par Swetalam, le dimanche, il va visiter à son grand-parent.
सो le dimanche nous rendons visite आ में घरों पारो, ठीक है, से आ सौ घरों पारो यूज नहीं करे, आप से लिखो बिकॉज घरों पारो इज प्लूरल ना, ग्रैंड पेरेंट्स है ना, सो प्लूरल, इट्स नॉट वन, है ना। अगर ग्रैंड फादर होता तो सो यूज करते, ग्रैंड मदर होता तो हम करते, हाँ से इज वुड बी द राइट आंसर। सो le dimanche il va visiter à ses grands-parents, करेक्ट लो और अंकित। le dimanche il rondo नहीं होगा, ना ना ना, रोंदो तो नो के लिए यूज करते हैं, यू नो हमने करा था क्लास में, आई मीन जो हमारा फर्स्ट वीडियो था, सब्जेक्ट नो के साथ हम ओ एन एस यूज करते हैं, राइट, है ना। तो रोंदों के साथ रोंदो नहीं आएगा, रौंद आएगा, ई आर ई एन डी, il rend visite à ses grands-parents. Rondo, whenever you see ons in any conjugation, then ons is used with nu, the subject nu, है ना, that you can see in my video on subject pronoun, French subject pronoun. Yes, rendre, the infinitive of rendre is, it is re ending verb, rendre, re and dre, rendre. Yes, rendre is the infinitive, rendre. I have written in the chat box rendre, re ending, है ना। and re ending conjugation we have not done, I mean in my French pro channel, है ना, so it is rend with ill. Okay, so correct answer. Okay, now let's do the next question. Qu'est-ce que sa grand-mère prépare? The next question, second last question is qu'est-ce que sa grand-mère prépare, है ना। qu'est-ce मीन्स यहाँ हो गया what, qu'est-ce सा grand-mère, his grandmother, है ना, prepare, है ना, क्या बना रही हैं वो। now तो see the text and answer the question. तो what his grandmother is preparing, है ना। is the answer is there, let's see. Nous rendons visite ma grand-mère cuisine très bien. Yes, what would be your answer? Yes, this is very interesting question. You know, it will help you to understand the text, the vocabulary, the structure. So, qu'est-ce que sa grand-mère prépare? है ना, what is his grandmother is preparing or making or cooking, what she is doing. Yes. Second last paragraph is very important, है ना। Le dimanche, nous rendons visite à mes grands-parents. Ma grand-mère cuisine très bien. Elle prépare toujours un délicieux gâteau au chocolat. Yes, you have understood. I know you guys have understood the question, the text, but only you have to convert it into correct sentence. Elle prépare toujours un délicieux gâteau au chocolat. Bravo, 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 bravo. Good job. Bon travail, bon travail. In my first video, I have given this greetings. Bon travail means good job. Good job. Bon travail. So bon travail, है ना? She is preparing delicious cake, chocolate cake, especially chocolate cake. Yes. The next question, I think that would be the last question. Last question is que fait-il avec sa famille quand il fait beau? Que fait-il? क्या करता है वो? Avec sa famille, है ना? With his family. When it is good, when the weather is nice, है ना? Quand il fait beau. जैसे आज का मौसम अच्छा है, if the climate is good today, so आप कह सकते हो il fait beau aujourd'hui, है ना? Il fait beau. It is good weather, है ना? Il fait beau. तो que fait-il avec sa famille quand il fait beau? क्या करता है? Now, next.
Answer, search. Yes, Sweta Alam has also written Sa grand-mère prépare un gâteau au chocolat. That is absolutely right answer. और आपने लिखा है मिस्टर अंकित एल प्रेपार toujours un délicieux. That is also right answer. Yes, the last question is you have to find the answer for the last question. Last question है ना, क्या है? With family, what he does when it is good outside. Yes. L'après-midi, quand il fait beau, nous faisons une promenade dans la forêt. Yes, your answer. Quand il fait beau, ils font une promenade dans la forêt. Ils font quand il, okay, let me see, quand il fait beau, nous faisons. Yes, Ankit, you really got the right answer because here the question, man, nous faisons, we have walk in the jungle. तो we को आपने they से convert किया. Yes, they walk in the garden, in the jungle. That is right answer. Ils font une promenade dans la forêt. Forêt, my dear French pro, forêt is a masculine, I think, है ना? वहां पे थोड़ा वो मिस्टेक है. फॉरे इट इज मैस्कुलिन, सो ला की जगह में एल ई यू कैन यूज, है ना? ठीक है. Okay, so now correct. Okay, so I think you have answered all the questions. I think let's see the bonus question. What is the bonus question? Let me see. Let me click here. Click इसी, click का मतलब हो गया click here. Click इसी, click here. Pour, for, discover, है ना? To discover one bonus question. Okay, the question is combien de sport Thomas pratique till pendant la semaine, है ना? कौन कौन सा, how many sports, है ना, he practice during the week. अब ये क्वेश्चन है. combien de sport, how many sports Thomas pratik, pratik means practice. Pendant is, you already know, pendant means during the weekday. Okay, now see the answer. Yes, you find your answer, please. Pendant la week, याद रखना, not weekend, pendant la week, weekdays. So lundi et mercredi, je joue au football, okay. And mardi, je fais du vélo dans le parc. Et le jeudi, je nage et je vais à la piscine pendant une heure. Ok, Thomas pratique 3 sports pendant la semaine. ओके, आपने आंसर कहा थ्वा. वो कौन कौन से हैं? एक तो हो गया है j'aime beaucoup le sport, lundi et mercredi football, okay, and then cycling, and then swimming. Yes, your answer is right. ठीक है. Yes, this is right. If you click here, yeah, you can see the answer. Le garçon s'appelle Thomas, il a 14 ans. Il habite, you can see the answer also. Il habite à Lyon, il se réveille à 7 heures. Le lundi et le mercredi, il joue au football. Le jeudi, il va à la piscine. Le samedi, il fait ses devoirs. Le dimanche, il va chez ses grands-parents. And sa grand-mère prépare un délicieux gâteau au chocolat. You can match your answer. Quand il fait beau, il fait une promenade dans la forêt avec sa famille. Et Thomas pratique 3 sports pendant la semaine, le football, le vélo et la natation. Voilà, आप सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट था. Your answer were absolutely right. ठीक है. So, dear French Pro Global students, you want me to do one more
reading comprehension, or we can end the class today? I mean now, because I have already one such reading comprehension. So if you tell me, then I will proceed. Otherwise, I'll stop here. Sir, we can end the class. All right, all right. Okay. So I think it's very late. Even I have to sleep. And it's 10:30. Il est 10h26. It's 10:26. So nous allons arrêter ici. We are going to stop here. And please, I think you have the idea how to solve reading comprehension and all. है ना? So this is how you are going to answer in the exam also, है ना? Read the question, understand. Answer is there in the text. आपको याद होगा one thing. J'aime le géographie et les sciences. I like geography and science. But the question was which matière he likes, है ना? तो कुछ चीजें ऐसी होंगी, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होंगे बट इनडायरेक्टली होंगे, है ना? तो यू हैव टू आंसर, है ना? आपको कॉन्टेक्स्ट समझना है एंड देन यू हैव टू आंसर, ठीक है? सो रात को सोने से पहले हम क्या ग्रीटिंग क्या कहते हैं फ्रेंच में, है ना? विच ग्रीटिंग वी हैव टू से? यू हैव ऑलरेडी रिटन बोन नुई मिस यू. बोन नुई मीन्स सो जाना. ऑल राइट, गुड नाइट, बोन नुई. All right, so I'm ending the class today. Merci beaucoup.